So welcome you all to the next video on how to answer particular questions in a job interview. In last video, as you have already seen, we have talked about how to create that first impression. What are the things which we need to take care of whenever we are somewhere in the middle of the interview. So today we are going to learn how to answer particular questions. वे कॉमन प्रश्न जो कि जनरली हर एक कैंडिडेट से पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से उन प्रश्नों का भली भांति उत्तर देना है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे. Generally, the first question is, tell me something about yourself. So I'll be presenting all those answers which are given by some of the experts. There are no specific answers which can be considered as the perfect one. But here comes the answer which have been given by some of the experts, and they happen to say that if you answer this particular question in this fashion, then probably it will sound as a good answer. So tell me something about yourself. So Rajan Kalia, one who is co-founder of Celto DFE Consulting, he has said that your answer should be precise. आपका जो उत्तर है वह छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, because we all remember that brevity is the soul of wit, and structured to offer a brief personal and professional summary of yourself. So whenever anyone is asking you the question, tell me something about yourself, it should be precise in itself, it should be concise, and it should give a brief summary about your personal and professional achievements. आपकी पर्सनल और आपके कार्यक्षेत्र में आपकी क्या-क्या उपलब्धियां हैं, वो आपको संक्षिप्त रूप से बतानी चाहिए. क्या इसमें हमें फैमिली बैकग्राउंड शामिल करना चाहिए? डेफिनेटली आप एक या दो लाइन शामिल कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा अधिक आप इसे ना शामिल करें. आप कुछ अपने गोल्स के विषय में बता सकते हैं, आप कुछ प्रोजेक्ट्स, समर ट्रेनिंग्स के विषय में बता सकते हैं, और आप कुछ अपने व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन भी उसमें शामिल कर सकते हैं. Let's talk about the next question, which is generally posed to all the students. What is your greatest strength? किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए? So Ruth Singh, one who is former head HR, MK Global Financial Services Limited Mumbai, has said, describe 2 or 3 skills, सिर्फ 2 या 3 skills that are most relevant to the job, which are very particular about that particular job, which are very relevant, which are very substantial, and which are very important for that particular job. You can always mention them. Avoid cliches or generalities. आप जनरल चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन शामिल ना करें, और ऑफ्ट क्वाटेड जो फ्रेज हैं आप उन्हें भी शामिल ना करें. वे सभी एक्सप्रेशन जो बहुत ज़्यादा यूज़ के कारण अब अप्रचलित हो गए हैं, उन्हें अवॉइड करने की कोशिश कीजिए. लेकिन 2 और 3 ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल जो उस जॉब के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप उन्हें डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं. नाउ with everybody, the answer is going to be a different one, because you will have to come up with your own strengths. What do you know about our organization? How many times students are also posed the same question and they are supposed to come up with an answer? So Rajan Kalia has said how to answer this particular question. Focus your response on what you understand about the company: history, product, services, industry leadership, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, एंड व्हाट यू फाइंड एक्साइटिंग अबाउट इट्स फ्यूचर. जब कभी आपसे प्रश्न किया जाए कि आप इस पर्टिकुलर संस्था के बारे में, या आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, तो आप उस प्रश्न के उत्तर में शामिल कर सकते हैं कंपनी की हिस्ट्री, उसके कौन कौन से उत्पाद हैं, क्या क्या सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, और उस भविष्य में वह कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करने वाली है, भविष्य के लिए क्या क्या संभावनाएं मौजूद है. आप उन सभी बातों को अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर उचित प्रकार से या भली भांति दिया, तो आपके इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि आप डेफिनेटली उस कंपनी में जाने के लिए बहुत कीन हैं, और आपने उसके बारे में जो रेलेवेंट रिसर्च है वो पहले से पूरा कर ली है. Next question is, why should we hire you? How many times a candidate is posed the same question and then he feels baffled how to answer this particular question? Because if you say that there are 100 of candidates who are sitting outside and I'm just like them, probably you do not hold a sound chance of getting recruited into that particular company.
So how to answer this particular question? Shilpa Chakraborty, who is Director, Grey Matters, has said how the person is going to contribute in the organization, what value addition he or she brings in. आप बात कर सकते हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और आप क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट या क्या क्या 2-3 प्रोमिनेंट चीज़ें हैं जो आप उस कंपनी के विषय में लाना चाहते हैं या उस कंपनी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। और अगर आपने इस प्रकार का उत्तर दिया तो अगेन ये आपकी कीननेस तो दिखाता ही दिखाता है, साथ ही आप कितने इनोवेटिव हैं और आप कितना नोवेल्टी अपने आइडियाज़ में रख पाते हैं वो भी इससे परिलक्षित होता है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए आप उसमें कोशिश करें कि आप किस प्रकार से उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो शामिल कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? So people generally say, always try to turn your weakness into a positive or demonstrate how you have tried to overcome your weakness. जब भी आपसे पूछा जाए कि आपकी क्या कमी है, हमें कमी बतानी है, लेकिन साथ ही साथ यह भी जोड़ देना है कि मैं उस कमी को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यह कहा सुधीर धार ने, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ग्रुप CHRO मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आप किस प्रकार से अपनी कमी को बता सकते हैं और साथ ही साथ यह भी जोड़ दें कि मैं इस कमी को पूरा करने के लिए या इस वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहा हूँ, उसे भी डेफिनेटली शामिल करें। आजकल किसी समय में almost I should say 15 years ago people used to come up with an answer that I am workaholic or I do not rest until I complete my task, but nowadays even such answers also seem unrealistic. Therefore people come up with a response, maybe that you can assert I have a poor handwriting but I have been trying hard to improve upon it, right? So that in this way you can come up with an answer of this particular question. Sometimes you are asked another question, and that is the most difficult situation you ever faced in your life. So how to come up with an answer of this particular question? So again, Ruth Singh has said, preferably the answer that wasn't caused by self. Some such situation which you never caused in your life and which had a positive outcome. कोई ऐसी स्थिति जिसको लाने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन वो आपके जीवन में उत्पन्न हुई, लेकिन साथ ही साथ आपने उस सिचुएशन को आप कैसे ओवरकम कर पाए और आप उससे क्या सीख पाए, वो आपको अपने उत्तर में दिखाना होगा। You can always say that yes, at such and such particular time I faced a difficult situation, but yes, even that difficult situation has made me more determined, has made me more diligent, has made me more confident, and I have been able to learn such aspects from this particular incident or from this particular situation. So that is how you can answer this particular question. Next question, and I believe it is a very interesting question which is generally asked to all the candidates. What salary do you expect? आप कितनी सैलरी, कितनी तनख्वाह लेना चाहते हैं? अब इस प्रश्न का किस प्रकार से उत्तर दिया जाए? People generally say that you should never be quoting any figure whenever it comes to your salary. Rather, you can always say that I should be given a salary which is in proportion to my qualification and experience, and it is at par with peers or similar roles in the organization. So never quote any of the figure, but at the same time you can say कि मेरी क्षमताओं और मेरी योग्यताओं के अनुसार जो भी कंपनी के नॉर्म्स हैं आप उसके हिसाब से मुझे सैलरी दे सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी फिगर कोट नहीं करना चाहिए. Next question, which is generally asked of all students, is what do you look for in a particular job? आप किसी भी प्रकार की जॉब में क्या ढूंढते हैं या क्या करना चाहते हैं? So Rajan Kalia has come up with the answer, and he has said that enthusiasm for the job, opportunities that meet your long-term career plans and support your professional growth. So instead of stating that you are looking for a good salary, or instead of saying that you are looking for good resources, or you are looking for all the facilities which the company is offering, instead of saying all that, you can always say that I have been quite excited about the opportunities which this company offers, and how the company's I should say long-term career plans get matched with your expectation
even you can assert that point also. कंपनी किस प्रकार से मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ को सपोर्ट करेगी, आप वो चीज़ें भी उस प्रश्न के उत्तर में शामिल कर सकते हैं. Now let's talk about some of the things which we should always be scared of doing whenever we are appearing for an interview. कुछ वो चीज़ें जो हमें ध्यान रख करके हमेशा अवॉइड करनी चाहिए. So never make any sexist, racist or inappropriate comments. कोशिश कीजिए because interview is thoroughly a formal activity and therefore we should always keep in mind that we should never come up with any sexist, racist or inappropriate comment because that is going to diminish my entire image. That is going to, I should say, prove futile my entire effort. Talk about your problems. Nobody wants to hear about your problems, be it personal problems or professional problems. कोशिश कीजिए कि आप कभी भी अपने इंटरव्यू के दौरान आपकी समस्याओं का जिक्र ना करें. समस्याओं से आपने क्या सीखा वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन समस्याएं कोई नहीं सुनना चाहता, लोग समाधान चाहते हैं. Interrupt the interviewer. Never ever interrupt the interviewer. Be overly friendly. कोशिश कीजिए कि आप अपने इंटरव्यू के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत कीजिए बिकॉज उससे उसकी फॉर्मेलिटी या उससे उसकी गरिमा का उल्लंघन होता है. बी क्रिटिकल ऑफ प्रीवियस और करंट एम्प्लॉयर. अगर आपने एक पर्टिकुलर नौकरी जो आप पहले करते थे उसे छोड़ दिया है, बहुत बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपने वो पर्टिकुलर आपकी पास्ट जॉब क्यों छोड़ी, और ऐसे में बहुत बार कैंडिडेट्स अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर की निंदा करने लगते हैं. कोशिश कीजिए, ये आपको एक नेगेटिव इमेज में डाल देता है और इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप कभी भी अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर की निंदा ना करें. लेट योर गार्ड डाउन. नेवर एवर डू दैट. ब्लफ, इवेड और लाई. हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का झूठ बोलना या आपके एम्प्लॉयर को बातों में उलझाना या उनसे किसी प्रकार की कोई गलत अपेक्षा रखना, ये सभी चीज़ें आपको नेगेटिव इमेज में डालती हैं और इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि इन सभी चीज़ों को हमें कभी नहीं करना. Next, let's understand what do we mean by this non-verbal behavior in a job interview. So if you are leaning slightly forward while sitting to look alert and enthusiastic, so that should be your non-verbal behavior. Avoid gestures, sweeping movements of the hand. कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने हाथों को बहुत ज़्यादा खोल कर के कोई चीज़ बताने की कोशिश करते हैं तो ये सभी नॉन वर्बल बिहेवियर आप अपने इंटरव्यू में ना करें. Don't fidget. Never ever play with your key ring or pen or any other thing which is there in your hand, right? Never ever do that because that shows nervousness on your part. Maintain steady eye contact with interviewer but don't stare. कोशिश कीजिए कि जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप एक अप्रोप्रिएट आई कॉन्टैक्ट रख करके उस प्रश्न का उत्तर दीजिए, लेकिन उन्हें घूरिए नहीं. Now if we talk about employers, so employers non-verbal behavior is equally significant. So if they are writing down a note, it is a positive signal. अगर वो अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है. सिग्नल्स टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे से कुछ सिग्नल एक दूसरे से किसी नॉन वर्बल बिहेवियर के थ्रू बात कर रहे हैं तो दे आर ट्राइंग टू इग्नोर यू. If it is lack of enthusiasm, then definitely that is a negative sign for you. Silence, if they are silent, then definitely you should not be panicking because maybe that they are thinking about some particular thing. Exit gracefully. Once my interview is over, I am also supposed to exit gracefully. So how to go for that particular gesture? Get up noiselessly. जब भी आप खड़े हों, अपनी कुर्सी से खड़े हों, तो कोशिश कीजिए कि किसी भी प्रकार की आवाज़ इसमें निहित ना हो. Thank the interviewers. Thank the interviewers for their time, for their effort, for the generosity with which they have handled you. So always remember to thank them. No queries, remarks once it is over. Once you have been said, okay, thank you, we will let you know, then please remember you are not supposed to ask them any question. Simply you are supposed to thank them, you can say have a good day and then you are supposed to leave. Walk back confidently. Please remember, you entered with a confident gait and the same confident gait is supposed to be continued even when you are exiting. जब आप कमरे से बाहर जा रहे हैं तब भी आप उतने ही उत्साह से परिपूर्ण दिखने चाहिए. यह बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप किसी डिफ़िकल्ट बैटल को लड़ कर के आ रहे हैं और आप उसमें जीतने की आशा भी नहीं रखते.
exit silently. आप जब भी दरवाज़ा खोल कर के जाएं तो आप कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें साइलेंटली हो और नॉइज़लेसली हो, क्योंकि उन सभी कार्यों को करके आप वह पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ पाते हैं जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है. So these are all traits and these are all characteristics and these are all ways with which we can definitely sound more confident as far as appearing in all job interviews is concerned. So happy job interviews to all of you. I hope that you must have been able to learn all the strategies which we should keep in mind while opting for any of the question which has been posed by our employer. So happy job interviews to you all.